तो डे है इंस्पायर्ड साइंस कैंप का एंड हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर रामजी लाल हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ही इज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो आज वो आपको मैथमेटिक्स के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे जो आप लोग नोट करो ताकि के लिए और आगे तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आएंगे। एंड मैं सर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे MIT के सर। आप हमारे आज प्रांगण में पधारे, ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर आए और सर का वेलकम करें। डॉक्टर रामजी एट हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI हैदराबाद उत्तर प्रदेश। He started his research career at Institute of Mathematical Research Mumbai and served at the University of Allahabad in different capacities for over 43 years as a professor, head of department and the coordinator of DSA program. He was associated with HRI where he initiated a postgraduate program in mathematics and coordinated the Nurture program of National Board for Higher Mathematics from 1996 to 2000. Warmly welcome you, sir, in this inspired science camp. सब मैम एक बुक लेती आना बुक। थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। ऑन कर देना। Let me thank Professor Sharma also. So he invited me to give a talk over here, and I had a program to come to Delhi during Yes, this sir. period. So I was quite comfortable and I accepted it. And usually I shuttle from Delhi to Roorkee IIT. So Roorkee IIT also they have given some office to me, and I also interact with people over there. So and indeed I am also after my retirement. I retired long back in 2011, and after that I was adjunct professor at IIT Allahabad and at HRI. क्या हुआ इसमें ऐसा अमित? कहाँ चल रहा है? आवाज नहीं आ रही। So अभी तो चल रहा था। yeah, so I'm so glad to be here and to interact with all of you. आप लोगों से और आप लोग किस में कंफर्टेबल रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स भी रहे तो भी चलेगा काम। और फील फ्री टू इंटरप्ट एनी मोमेंट यू लाइक। जब भी आपको लगे तो इंटरैक्ट कीजिए, कुछ पूछिए। इट शुड नॉट बी वन वे ट्रैफिक। मैं कुछ बोलूँ वही सुनते रहिए, ऐसा नहीं है। आप भी कुछ इंटरैक्ट कीजिए और आपके भी कुछ जो कंफ्यूजन्स है वो पूछिए। सो हियर आई एम टू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स एंड जैसे ईश्वर के बारे में लोगों की हर आदमी अपने अपने रूप में ईश्वर का रूप देखता है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ने वाले मैथमेटिशियंस भी मैथमेटिक्स को अलग अलग तरीके से रियलाइज करते हैं। सो मैथमेटिक्स, व्हाट इज मैथमेटिक्स, व्हाट शुड व्हाट आई फील अबाउट मैथमेटिक्स। तो मेरी फीलिंग जो है मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए आपको। सो नाउ मैथमेटिक्स actually process, a kind of process.
So, am I audible? मैं तो थोड़ा तेज बोलता हूँ तो शायद सुनाई दे रहा होगा. So it's a process by which to acquire perfect wisdom by empiricism. You know empiricism. What is empiricism? So empiricism is it's empirical experiment के बारे में आप जानते होंगे. Empiricism की मीनिंग आप लोग मैं तो empirically बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट से अपने एक्सपीरियंस. क्या हो गया ये? बंद कर दो, इससे पहले फिर स्टार्ट कर दो. बंद करो. So really mathematics is a process acquire perfect wisdom using empiricism, some experimental observations, experiences and so on, and then try to put it in mathematical language using axiomatics. So whatever we feel, we put them in the form of axioms, and then some assertions, and afterwards use logical derivations to achieve something. So that is what I feel about mathematics. And everybody has, every mathematician has his own feeling about mathematics. And there is a very good book I will refer to you. What is mathematics? You see, it's very difficult to define mathematics. Mathematics, you can feel about mathematics. So for that you have to learn a little bit of mathematics. So there is a very good book written by Pura and Robbins, and that book is, the title of the book is What is Mathematics? It was written long back in 1941 by great mathematician Pura and Robbins, the Pura and Science Institute of the Science. So I refer. फोटो भी दे यहाँ थोड़ा लगेगी, वहाँ लगा दो. डिस्टर्ब कर दो. डिस्टर्ब लेक्चर चल रहा है ना. So if you get time, please go through that book. That's an excellent टाइम पे नहीं book. कराओ ना इसको. टाइम में मत कराओ ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं वो. Okay, so that is so now I talk about mathematics, and first thing I will start about the empiricism motivating mathematics was the work of Euclid. Euclid का नाम आप लोगों ने सुना होगा. Euclidean geometry, Euclidean algorithm, Euclid in 300 BC. He was the first to conceive the idea of mathematics in the form of empiricism. So he experienced and he postulated some postulates, So let me सर इधर है, सर इस तरफ. सब मार्कर्स हैं. So it was Euclid, 300 BC. So guided by his empiricism, he made some postulates. He wrote 13 elements, 13 volumes, 13 elements of mathematics, in which he described the basic fundamentals of geometry and arithmetic. Geometry and he all described with the help of postulates. So let me first start with the geometry, the postulate of geometry. So the first postulate, if you have, so he was conceiving in plane. No, so if you take 2 points, naturally it is like it is guided by this experience. There is a unique line passing through these 2 points. So that was his first axiom. So for him, the plane was a set of points, and from any 2 points we associate a line segment. So that was his first postulate.
The second postulate was that you can indefinitely extend this line indefinitely. So that was his second postulate. Nothing very special about this. Then the third postulate was all right angles are same. All right angles are congruent, same right angle. So naturally you will talk about right angle, you know what is a right angle. And the fourth postulate was all about circle. Given a point and given a length, given a number, you had a unique circle passing, having that center and the radius as that number. So that was his fourth postulate. And then the fifth postulate was the controversial one. This is known as parallel postulate. So, guided by his intuition and the empiricism, you see, he said that if you take two lines, passing two lines here, and you take another line which intersects both the lines, then the sum of the angle, if you take these two angles, interior angles, if it is less than two right angles, then this line will meet somewhere. This can be put it in another language. Given any line, take a point outside that, there is a unique line passing through that which is parallel to this line, which will never intersect. A third equivalent condition which you can say is that the sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees. All these three are equivalent. You can easily prove it. So for him, the fifth postulate was parallel postulate, and this was quite controversial. Here he missed something. Euclid missed something. So for him, so the first thing is, what is a line? This is the first thing. What do you mean by a line? What do you understand by a line? So it is relative in which space you are there. So for him it was simply plane. Suppose you are on the earth, you are in a sphere, you are on the earth. So what is a line which passes from, say, Delhi and Bombay? What is a line? Earth, I am taking it to be a perfect sphere. So what is a line? It is not the straight line. You cannot dig the earth to go from here to there. So it is a greater circle, you know. So the concept of line depends on the space in which you belong. Right? So if you look into a sphere, you look at a sphere, any sphere here, and you take 2 points here, then there is a unique line, the greater circle. Take this center, take this, and look at the plane, so that will be a circle, right? So that is really the line. So line means what? The communication from one point to the other point. If you want to go, what is the shortest route? That is basically that should be the correct definition of line. So he missed this, and so you know that till 20 years, this postulate was quite controversial, in which he showed that the sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees. But the converse of this was not provable because of this. So mathematicians were very fallacy, and it was first Gauss realized this slip, and he observed that there are other kinds of geometry, spherical geometry and hyperbolic geometry. So for example, if you are on a sphere, look at a line. So what is a line? That from any 2 points, and take the center, there is a unique circle passing through the center and that point, right? Take any other point, 2 points, another greater circle, but both will intersect. So there is no parallel concept of parallel line on a sphere. There is no concept of parallel line on a sphere. On the other hand, if you go to a hyperboloid, you know hyperboloid? Hyperbola, you know.
Hyperboloid, right? Hyperboloid. What is the equation of the hyperboloid? So x square upon a square minus y square upon b square minus z square upon c square is equal to 1. So this is a hyperboloid of two sheets. So here you have, this is a hyperboloid. So usually in mathematics we take one part of the hyperboloid, because if you want to do geometry, it should be a connected surface. So if you want to move from one point to the other point, then it should not be disconnected. So upper part of the hyperboloid, right? And if you move in on a hyperboloid and take 2 points, then the shortest route will be mostly a hyperbola, right? Shortest route. So here the line will be kind of hyperbola, and then if you look into different, so here the concept of parallel line is that given any line hyperbola and any other point outside that, then there are infinitely many lines which are parallel to this. There are infinitely many lines which will not intersect this particular line if you are on a parabola, in a hyperbola. On a sphere, there is no concept of parallel lines. On hyperboloid, there are infinitely many lines, parallel lines passing from a point outside a given line. So there are three extremes, depending on the curvature. The usual Euclidean plane is of zero curvature. The sphere is of positive curvature. Hyperboloid is of negative curvature. So there are three types of geometry which was discovered by Gauss, Bolia, Lobachevsky, and so on. So there are three. So I'll just try to make a little bit more clear. तो देखिए, ज्योमेट्री अक्सर आप लोग पेन में करते हैं, अगर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन पेन पे करते हैं, राइट? ठीक है ना? और स्फीयर पर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो एक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होगा, हाइपरबोलॉइड पर अगर कंस्ट्रक्शन करें तो कुछ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होगा. तो सो इफ यू आर इन स्फीयर में अगर 2 पॉइंट ले लेते हैं, x बार और y बार, ये 2 वेक्टर्स हैं. ये मान लीजिए आपका स्फीयर है और कोई 2 पॉइंट स्फीयर पर ले लिया, ये एक वेक्टर है. वेक्टर आप लोग समझते हैं ना? यस सर. वेक्टर x बार यूनिट वेक्टर, यूनिट स्फीयर हमने लिया है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? स्फीयर पर मूव कर रहे हैं, स्फीयर पर मूव कर रहे हैं वन पॉइंट से अदर पॉइंट, ग्रेटर सर्किल. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट विल बी, स्फीयर पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं s2 पर, x y इज व्हाट? इसका कॉस ले लीजिए, तो ये क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा. ठीक है? x और y 2 वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? उसके बीच का एंगल का कॉस यही डॉट प्रोडक्ट होता है. ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना? x डॉट y अपॉन नॉर्म ऑफ x, लेंथ ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1. जानते हैं ना? yes, और अगर यूनिट वेक्टर यूनिट स्फीयर पर है तो ये 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब x डॉट y, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगा. तो इसका मतलब cos, इसके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा, दैट इज द एंगल cos थीटा. मैं क्लियर? देयर इज अ थीटा, देयर इज अ यूनिट थीटा, दैट cos थीटा इज इक्वल टू x डॉट y. और वही थीटा इसका डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस होता है? आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क रेडियस 1 है, तो वही तो डिस्टेंस हुआ, राइट? सो दैट इज द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट का स्फीयर पर. सो जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल डिस्टेंस. यूजुअल डिस्टेंस क्या है?
यूजुअल डिस्टेंस जो यूक्लिडियन डिस्टेंस जिसको कहते हैं वो डिस्टेंस क्या है? x माइनस वाई का मॉड, x माइनस वाई का मॉड, राइट? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square square root of that. यही तो होता है, तो वो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है. लेकिन if you are on a sphere, the actual distance is this. This is the spherical distance. इसमें अगर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? ग्रेटर सर्किल. दो ग्रेटर सर्किल हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? तो कोई भी दो लाइन पर पैरेलल हो ही नहीं सकती, वो इंटरसेक्ट करेंगी. तो जैसे तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है. अगर हाइपरबोलॉइड पर है तो हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन हम यूनिट हाइपरबोलॉइड दे रहे हैं. ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सपोज यू टेक दिस, राइट, एंड लुक एट द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स x बार एंड y बार हियर. कोई x बार वेक्टर x1 x2 x3 y1 y बार y1 y2 y3 where x1 square minus x2 square x1 square minus y1 square minus z1 square is equal to 1 and x2 square minus y2 square minus z2 square is equal to 1. You take this. So this was the distance. What will be the distance? So here the distance will be hyperbolic distance. बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि cos hyperbolic. This is the distance between x1 y1 z1 and x2 y2 z2 will be hyperbolic angle. That will be hyperbolic angle. So what will be this? The distance इसको hyperbolic test हम कह रहे हैं. मान लीजिए x y is equal to x1 y1 minus x2 y2 minus x3 y3. इसको हम कहते हैं लॉरेंट जी इनर प्रोडक्ट. ये इनर प्रोडक्ट एक होता था y1, ये आप लोग करते आए हैं. दो का इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है x डॉट y. यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट किए गए हैं. ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो. यहाँ तो x डॉट x पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो. तो ये इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक एंगल. ठीक है, इसको ये जो है पॉजिटिव होगा हमेशा. कॉस ऑफ दैट ये हमेशा पॉजिटिव होगा. सो दिस इज द डिस्टेंस. और so this is the hyperbolic distance between 2 points on a hyperbola. कोई दो पॉइंट ले लीजिए x1 y1 x2 y2. Then this the cos hyperbolic, that there is a unique number. You know, cos hyperbolic आप जानते होंगे क्या होता है. cos hyperbolic का a क्या होता है? e to the power a plus e to the power minus a upon 2, right? You know, e to the power a plus e to the power minus a upon 2. ये हमेशा पॉजिटिव होगा एंड हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, राइट? This number will always be less than or equal to 1. So this is the hyperbolic distance. And this hyperbolic distance, if you look into the curve of shortest distance, then here there are infinitely many parallel lines. ये मॉडल ज्योमेट्री का फिजिसिस्ट के लिए बहुत उपयुक्त है. You know, फिजिसिस्ट का के लिए लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? What is the concept of line for a physicist? Path of light, ray of light. That is the means of communication, right? And the velocity of light is finite, right? So if you take any line at any point outside that, however far you go, there are infinitely many paths which will not meet there. So the parallel postulate of Euclid is not true here. So for physicists, this hyperbolic geometry is more suitable for physicists, you know, because physicists, you know, they depend on the empirical observations, and the means of communication is the fastest mean of communication is light, right? So that is this hyperbolic geometry. So you know, this is how this started. And Euclid, you know, he also postulated about numbers. And he was the first to have the concept of what you must have read about equivalence relation, the numbers, and so on.
But anyway, I'm not going to those details. So this is about, so there are three types of geometry. That is the concept of distance here, the concept of distance here. The Euclidean distance is distance of x and y is norm of x minus y. So this is the, so there are three distance, and depending on these you have three geometry. Euclidean geometry जो आप लोग करते आए हैं, और spherical geometry which is geometry on the sphere, and hyperbolic geometry which is on hyperbola. And most of the physical situation in which we encounter in physics, etc., it is hyperbolic geometry, right? So now on these spaces, so I'll talk about some constructions as well. So on plane construction, वो भी है क्या? चौक नहीं है क्या? चौक नहीं है क्या? इस पे कैसे लिखेंगे? इतने लिख सकते हैं। चलिए है, तो दिस इज, तो अब हम कुछ बेसिक हाई स्कूल ज्योमेट्री करेंगे. So I'll talk more about high school geometry and the constructions on plane. What is the relationship between geometry and algebra? So the first basic machine which you have is that of a straight edge and compass. सर्किल खींचने के लिए आपके पास कंपास होता है. ये सबसे आसान मशीन है. तो इससे क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने किया होगा. 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं. कोई लाइन दिया है तो उसके पैरेलल प्लेन में, पैरेलल जब भी हम कह रहे हैं तो ज्योमेट्री में बात करते हैं, यही बात हम ज्योमेट्री में भी करेंगे. ठीक है, तो आप पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, 90 डिग्री कर लेते हैं, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं. ट्राइसेक्शन का कोई रूल है आपके पास? ट्राइसेक्ट कर सकते हैं किसी एंगल को. कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ तो उसके बराबर एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं, उसके एरिया के बराबर ट्रायंगल भी बना लेते हैं. बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी कंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं. तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये है कि ज्योमेट्री के हेल्प से, स्ट्रेट एज और कंपास के हेल्प से कौन कौन से इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको और हम प्रिसाइज करें. हमने एक यूनिट ले लिया, कोई यूनिट आपके पास दिया हुआ, इसकी लेंथ 1, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया, एक यूनिट सीक्वेंस आपने लिया. So एक unit segment 1 is a number. So this 1 is attached with a unit segment here. Right? This is a segment here. Now this is given, and you are given straight edge and compass. So what are the numbers which you can construct? So suppose I take so suppose 1 is here, unit is given, and suppose A is a segment, and look at the equation x square minus ax plus b equal to 0. I want to solve this equation. I want to solve this equation geometrically. So suppose you are given A. A is a segment. A is already a segment, right? And B is also a given segment. So इसके रूट के लेंथ का सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? यू अंडरस्टैंड इट? पहले कुछ और हम बता दें आपको. सो दिस इज हियर इज 1. सो यू कैन स्ट्रेच लाइन एज यू विश. तो 1 है तो 2 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 3 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? तो कोई भी A दिया हुआ है, A अगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, B कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो A प्लस B भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो 1 दिया हुआ है तो कोई नेचुरल नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो कोई भी निगेटिव इंटीजर भी
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आर यू क्लियर? यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑल रेशनल नंबर्स एज वेल। 1/2 भी कंस्ट्रक्ट करने के, इसको बाइसेक्ट करने के, राइट? या 1/n भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे? ये 1 है, ये 1 है, तो क्या कीजिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन आप खींच सकते हैं, और 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम तक खींच सकते हैं इसको, राइट? एंड देन यू जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए और ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन खींच सकते हैं, तो ये क्या होगा? 1/n होगा। सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा? ये 1/n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, राइट? दिस इज ए, दिस इज 1 एंड पैरेलल आपने खींचा तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1/n। आर यू क्लियर? 1/n आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब 1/n कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 2/n कंस्ट्रक्ट करेंगे, 3/n कंस्ट्रक्ट करेंगे, m/n कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मतलब हर रेशनल नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आर यू क्लियर? बट इट इज, दिस इज नॉट द एंड। और क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर देखना चाहें, जैसे स्क्वायर रूट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 1 है, 1/1 ये है, तो परपेंडिकुलर खींच करके स्क्वायर रूट 2 कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रेशनल नंबर इस प्लेन पर जितने रेशनल नंबर्स हैं वो सब कंस्ट्रक्टिबल हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट यूजिंग योर स्ट्रेटज एंड कंपास। उस स्ट्रेटज और कंपास से उन पॉइंट्स को डिटेक्ट करने के सभी रेशनल नंबर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ सपोज अभी, और जैसे √2 भी कंस्ट्रक्टेड, अभी तो बहुत सारे नंबर कंस्ट्रक्टेड हैं, तो ऐसे नंबर जिनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उनको कंस्ट्रक्टिबल नंबर कहा जाता है। उनको हम कंस्ट्रक्टिबल नंबर कहा जाता है। तो मान लीजिए a कंस्ट्रक्टिबल है, a नंबर जैसे एक कंस्ट्रक्टिबल नंबर बड़ी है तो ये कंस्ट्रक्टिबल है, √2 है तो कंस्ट्रक्टिबल है। तो a अगर कंस्ट्रक्टिबल है और b कंस्ट्रक्टिबल है तो हम कहना चाहते हैं इसका जितना रूट है, इसका रूट क्या होगा? रूट होगा अल्फा बीटा कुछ होगा, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सिंपल हाइट ज्योमेट्री। हियर इज यू हैव a, सो a लेंथ का आप कंसीडर कर लीजिए, a कंस्ट्रक्टिबल है, दिस इज कंस्ट्रक्टिबल। सम ऑफ द रूट्स इज a, सम ऑफ द रूट्स इज a, राइट? नाउ टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, you can do that, and then you draw a circle with this as diameter. Extend it here and draw √b लेंथ का एक हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, √b। तो √b कैसे कंस्ट्रक्ट करें? √b लेंथ का कैसे कंस्ट्रक्ट करें? √b लेंथ कंस्ट्रक्ट करें, पता नहीं आप लोग ने कहीं शायद किया भी हो, करना भी चाहिए। ये b है, तो √b कैसे कंस्ट्रक्ट, ये दिया हुआ है। अब हम एक सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जिसका की लेंथ जो है √b, यू फॉलो है? सो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? आई एम गिविंग अ सिंपल, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे। यूनिट सेगमेंट आपको दिया हुआ है, यूनिट सेगमेंट आपको दिया हुआ है, तो b+1 इसको आप यहाँ से एक 1 यूनिट का ये जो दिया हुआ था 1 यहाँ पे खींच लिया, और इसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक इसको डायमीटर मान करके एक खींच लिया, राइट? सो यू ड्रा ए सर्किल, राइट? आई एम सॉरी, आई एम नॉट, मैं डायग्राम बनाने बहुत वीक हूँ तो अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन एनीवे, सो दिस इज 1 and if you draw a perpendicular from this point to this line, then what will be this length? You know, circle के थ्योरम आप पता ही है कि दोनों का perpendicular, दोनों का product, the product of this and this will be this, product of this into this, right? And the product of this into this is b. ठीक है? ठीक है ना? ये आप जानते हैं ना, कोई भी सर्किल तो आपका हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। ये खींचा, ये खींचा, तो दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, द एरिया फॉर्म बाय ये रेक्टेंगल पढ़ा होगा, ठीक है ना? है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है this into this is b and this is equal to this because this is perpendicular, this is, you know, on circle, this is the diameter. So therefore what will be this? This will be √b. So √b you have construct, right? Is it okay? √b you can construct. Now a is this, and take any point outside here and draw a perpendicular distance, and √b you have constructed, so take this √b. Draw a parallel line here.
and draw a perpendicular from this point to this, this point to this. So this and this. So this will be one root and this will be another. Alpha plus beta is A and alpha into beta is B. So that is the alpha and beta are the roots. So therefore you can solve a quadratic equation geometrically. You want to ask something? So you can solve a quadratic equation geometrically. कोई भी quadratic equation को solve कर सकते हैं geometrically, right? If you are given constructible number, so that, right? Okay. So इसका मतलब अब rational numbers ले लिया, rational number से बहुत सारे equations बनते हैं, तो उन equations के roots भी constructible हैं. फिर वो जब कंस्ट्रक्टेबल हो गए तो उन पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो उसका भी रूट कंस्ट्रक्टेबल है, तो गो ऑन डूइंग दैट, सो यू विल बी गेटिंग चेंज, एंड इफ यू लुक इनटू द लिमिट यू गेट ए प्लेंटी ऑफ कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स, कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स एंड कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट्स, बट स्टिल देयर आर नंबर्स व्हिच आर मिसिंग. अभी भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कंस्ट्रक्टेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल 2 to the power 1/3 you cannot construct using straightedge and compass. You cannot solve a cubic equation. You can solve the equations which are coming out of quadratics extended by quadratics. उसके बीच में जो आएगा उसको हम कर लेंगे, लेकिन cubic equation के बीच में नहीं आएगा. So cubic equation you cannot construct. Right? There is another problem which you must have seen somewhere. You can construct a quadrilateral, a regular triangle, equilateral triangle आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? रेगुलर पेंटागन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट मी आस्क व्हाट आर द एंगल्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेबल. सपोज दिस नंबर इज कंस्ट्रक्टेबल एंड सपोज दिस अल्फा इज कंस्ट्रक्टेबल. एंगल अल्फा अगर खींच सके तो ये cos अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा. इसका इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया तो ये यूनिट है तो ये cos अल्फा हो जाएगा, तो cos अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा. ठीक है, राइट? cos 20 एक क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, राइट? cos 20 60 डिग्री को ट्राइसेक्ट करें तो 20 आएगा ना, तो cos 3 थीटा राइट cos और थीटा के टर्म में, तो दैट विल बी डिटरमिन cos 20 एक क्यूबिक इक्वेशन को डिटरमिन करता है. तो cos 20 हैज टू बी ए रूट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन. यू कैनॉट सॉल्व इट ज्योमेट्रिकली. सो देयरफॉर cos 20 कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. 20 डिग्री एंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. यू कैन कंस्ट्रक्ट 20 डिग्री. So that is here. This is not constructed. So naturally you can ask what are the regular polygons which you can construct by using straightedge and compass. Quadrilateral construct करने क्यों 90 डिग्री एंगल तो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? और ये दिया है, इसके साइड पर 90 डिग्री खींचा और ये दिया. आर क्लियर? या सेंटर से उसके एंगल 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं. आर क्लियर? तो अगर कोई पेंटागन कर लेते हैं तो बीच का एंगल क्या होगा? सेंटर से बीच का एंगल वो कंस्ट्रक्टेबल होगा. यू कैन इजीली सी, राइट? बट 7 गन, रेगुलर 7 गन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट. 7 regular 7 gun you cannot construct using straightedge compass, whereas 17 gun you can construct. Right? Are you clear? So the numbers which are of the type 2 to the power n plus 1 they are constructible. 17 gun, the 17 gun to Gauss में का एक वो भी है. So these are the numbers which are constructed. Now I ask another question. The question: can you develop a machine which solves a cubic equation? Can you think of a machine? अब ये तो हमारे पास बहुत सबसे आसान मशीन थी, एक साइकिल और स्ट्रेटजेज पे आसान मशीन तो कोई, लेकिन कोई और भी मशीन क्या बनाई जा सकती है जो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करे, जो 2 to the power 1/3 लेंथ का सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर सके, बना सके यूनिट से लेकर कंस्ट्रक्ट. क्या कोई ऐसी मशीन की बारे में सोच सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सके?
या मान लीजिए 5th डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर सकें एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ सच मशीन? ये क्वेश्चन है, राइट। क्यूबिक मशीन, क्यूबिक इक्वेशन को, क्यूब रूट ऑफ 2 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यस वी कैन डू, देयर आर मशीन्स। ग्रीक मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी इसको दिया था और वो मैं शायद बता पाऊंगा आप लोगों को, बट दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट स्टिल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड नेचुरली हमारे पास टाइम क्या है? तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या कोई मशीन आप डेवलप कर सकते हैं, या 5th डिग्री इक्वेशन को, या कोई मशीन जिसे रेगुलर 7 गन कंस्ट्रक्ट कर सकें? क्या ऐसा मशीन डेवलप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे वो हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे कर्व्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पैराबोला है, पैराबोला यू कैन ड्रॉ, राइट। इलिप्स ड्रॉ करने के लिए तो आप जानते हैं फोकस दिया हुआ है, एक वो ले लीजिए, क्या कहलाता है, धागा ले लीजिए, कोई लंबा सा धागा ले लीजिए, तो उससे खींचने का तरीका है, राइट। तो वैसे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ और मशीन, जो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, क्या आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन के लिए है, और मैं अभी बता पाऊँगा आपको। So these questions are already there, और इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शंस में आते हैं। Now another problem regarding this geometry and algebra, I talk about the solvability of equations. Solvability of equations. अब अलजेब्रा पर प्योरिटी हम आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड है ना, श्रीधराचार्य मेथड। यस सर। माइनस बी फार्मूला है, क्या कहना फार्मूला है, तो माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4। कुछ वरी करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो उसको फैक्टराइज करने का क्या फार्मूला है। उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपके पास एक मेथड है, जिसको हम कहते हैं कार्डानो मेथड। एक कार्डानो मेथड होता है, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए आप, हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज नोन एज फेरारीज मेथड। 4th डिग्री इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे आपने लिया ax to the x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सो algebraically by adding, taking the coefficients a, b and c and using the usual algebra, addition, multiplication, subtraction and taking root, इसके हेल्प से इसका फॉर्मूला। उसी तरीके से क्यूबिक में भी अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो a b c d के टर्म में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन टेकिंग रूट टू सेकंड 2 डिग्री रूट और 3 डिग्री, वी कैन हैव ए फार्मूला। वो बता नहीं रहे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बता नहीं रहे, तो वी हैव दैट फार्मूला, वी कैन सॉल्व इट, राइट। वो कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएंगे, एक रियल रूट तो होगा ही, लेकिन रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं, इसका रूट जरूरी नहीं सभी रियल, एक रियल रूट होगा इक्वेशन का। वैसे 4th डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव अ फार्मूला यूजिंग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द कोएफिशिएंट्स के टर्म में एंड टेकिंग द रेडिकल ऑपरेशन, रेडिकल मींस रूट का ऑपरेशन, 2 सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, एटसेट्रा, यू कैन सॉल्व दिस, देयर इज अ फार्मूला।
But the question, what about fifth degree? What about fifth degree? Can we think of such a formula such that given any equation ax to the power 5 b x4 cx cube plus dx square plus dx plus f equal to 0 a b c d e f में को जोड़ घटा करके और डिवाइड करके और रूट्स ले करके क्या इसका कोई सॉल्यूशन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये सवाल है। ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट फिफ्थ डिग्री इक्वेशन इज नॉट solvable by radical operation. The proof requires and this was actually proved by a mathematician, नाम आपने सुना होगा, ऑबेल का नाम सुना है आपने? ऑबेल का ABEL, ऑबेल and गैलवा ऑबेल। He was a great mathematician. He died very young at the age of 27 only. He died at the age of 27 and lived a very poor, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था ये। तो इसको मैथमेटिक्स करने के लिए करता था ये, और उसके काफ़ी भाई बहन थे, काफ़ी कुछ इसी के ऊपर सब। तो he died very young at the age of 27, and you know tragedy was that before he died, a week or two before, he got an offer as professorship in Germany. Very sad. So he died at the age of 27, and he showed that this is not possible. This was a problem taken for long, and it was proved by Orwell that this is not possible. The theorem is known as the theory of Orwell. And then Galois, a mathematician who also died very young at the age of 20 only. He died at the age of 20 only. So he could see what is happening in the proof of, see, actually the idea is that of the symmetric functions. So it was actually Galois who really observed what is going on this proof, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको पूरी अच्छी तरीके से गैलवा ने समझा, और गैलवा ने एक थियरी बिल्डअप कर दिया। गैलवा थियरी है, गैलवा थियरी बात नहीं बेटा, ये इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, एक थियरी बिल्डअप किया जाए गैलवा थियरी, राइट। सो इन जनरल फॉर n greater than or equal to 5 you may there is no such formula. It does not exist. He proved it. इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्वेबल नहीं है। कभी किसके लिए हो भी सकता है कि 5 minus 2 equal to 0, इसका तो है 5। But in terms of indeterminates A, B, C, D, E, F ये variables हैं। In terms of this, it is. So that is so I got able to. So there is a. तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी बात कही, अब आप लोगों को कुछ अगर डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ वो करना चाहते हैं, पूछ सकते हो बेटा आप सर से मैथमेटिक्स के बारे में, है ना, पूछ लो, ऐसा मौका नहीं मिलता बार बार, सर का भी टाइम हमें बड़े मिला है। हम तो इंटरैक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ बेटा, मैथमेटिक्स बहुत, और मैथमेटिक्स में कभी आप लोग डिस्टिंक्शन मत कीजिएगा। हमने अलजेब्रा की किताब की तरफ 4 वॉल्यूम अलजेब्रा 4 वॉल्यूम्स है, टाइटन्स का हमने अलजेब्रा दिया है, लेकिन ये स्प्रिंगर की किताब है। सो इस किताब में ये पूरी गैलवा थ्योरी है। गैलवा थ्योरी इज
which chapter? Ninth chapter. तो अब आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ पूछना चाहें? कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? मैं तो कुछ भी पूछ लो, ये मत सोचो कि इधर मैंने पूछना जो सर ने पढ़ाया। जो अच्छा होगा, हमको बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आप पूछें और हम कहें कि इसका आंसर तो हमको तो नहीं पता है, हमको शायद ये भी कहना पड़े कि किसी को भी नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। आप पूछ सकते हैं, वेरी लाइकली। और खास करके नंबर थ्योरी में एक चलता फिरता कुछ सवाल पूछ सकता है नंबर्स के बारे में, और जो मैथमेटिशियंस कहें कि इसका आंसर ऐसे बहुत सारे सवाल। You know, मैथमेटिक्स बेसिकली ज्योमेट्री और अर्थमेटिक ही है। सही ना, ये बता दो थोड़ा मैथ कैसे पढ़ें बच्चे कंपटीशन के लिए, थोड़ा सा कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के लिए तो यही है कि आपको खूब मैं देखता हूँ ज़्यादातर सवाल लगाने की बात होती है, तो आप लगाइए, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, राइट, एंड देन ट्राई क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स पढ़ने का एक तरीका, मतलब एक बारे में कहना चाहूँगा कि किसने कहा था इसको, शायद रीड, डाइजेस्ट एंड देन फॉरगेट। Read, digest, and then forget. All the three are important. All the three are important. Reading पढ़ना जरूरी है, पढ़ें, उसको डाइजेस्ट करें, जैसे खाना डाइजेस्ट किया है उसे डाइजेस्ट करें, और उसके बाद भूल भी जाएं, क्योंकि वो आपका अपना हो गया है, और भूलेंगे नहीं तो सोचेंगे नहीं। हर समय आप मेमोरी पर डिपेंड करेंगे, तो सोचेंगे, राइट? तो फॉरगेट, रीड, डाइजेस्ट करें, फॉरगेट। और कंपटीशन के लिए तो यही है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और ये मत सोचिए कि जो सवाल बना के दिए जाते हैं तो बैक कैलकुलेशन होता है। अक्सर आप ही कोई सवाल बना करके दे दीजिए और वो लगाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आपने पता नहीं कौन कौन सा ऑपरेशन कैसे कैसे लगा करके अल्टीमेटली आंसर दिया। अब वो प्रोसेस तो आपको पता है, और बट स्टिल if it is based on the concept and the theory, you can think that you can just have the concept कि क्या approach हुआ होगा, कैसे ये गया होगा, यहाँ से यहाँ कैसे गया, ठीक है? तो ये है, सवाल को लगाइए, क्वेश्चंस को लगाइए, और आपके इंटरमीडिएट में तो बहुत सारे अच्छे सवाल हैं, बहुत कैलकुलस के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? जैसे ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन है तो हमें तो बहुत साधारण चीज़ें बताई, लेकिन ज्योमेट्री में और बहुत सारे दे दिया जाए, ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाए, उसको कोई एंगल ही निकालिए, कुछ करिए, राइट? तो उसके लिए तो बस यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, उनके आशीर्वाद से मैथ जीत जाओगे, मैथ सीख जाओगे, इतनी वो है। Thank you so much, sir, for such a knowledgeable lectures to our students. मुझे लगता है बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, और मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन को आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो मैथ्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू यू। अभी हमारे सेकंड गेस्ट लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री का है। मैम अभी जस्ट शी विल बी रीचिंग, तो आप 2 मिनट इंतज़ार करो। और मेरे को अगर किसी को पानी